everyone, welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Reeti. We are going to continue with the chapter Carbon and its compounds. In the previous videos, we started talking about the chemical properties of carbon, right? In that, it included combustion and addition. Addition is also known as question mark. If you know the answer, comment me below. Okay. In today's video, we are going to see two more types of chemical properties of carbon. Let us get started with uh, first. Let us say oxidation. Before I explain what it is, you tell me what it is. See, as far as I can see, they will not ask you to define oxidation with respect to this carbon and its compound chapter, but also oxidation was a term in your first chapter chemical reactions and equations. तो ऑक्सीडेशन तो यू मस्ट ऑल नो होता क्या है, राइट? ऑक्सीडेशन यू नो, बट नाउ विल सी कि इस चैप्टर में व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ chemical property. So basically, oxidation is nothing but addition of oxygen and removal of hydrogen. In related to oxidation, we learn few terms as well, जैसे reducing agent, oxidizing agent. तो reducing agent क्या होता है? Reducing agent is the, let me just write it down. Reducing agent and oxidizing agent. Tell me, chapter 1 तो पढ़ा होगा. I hope you all must have learned this chapter by your heart, by your soul. This was the first chapter and I think कि first chapter का basis जो होता है सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा easy होता है for us because we have a new spirit to learn it, right? So reducing agent वो होता है जो oxidize होता है, like any substance which is getting oxidized is reducing agent, और oxidizing वो agent होता है जो खुद reduce हो रहा होता है. Now don't tell me you don't know what is reduce. और reduction क्या होता है? I know you all know, but just for those who are missing some puzzles, they are confused in their brains, it is just a recapitulation. About 2 minutes, you can skip it if you know this already. So reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen. You can see oxidation का exactly opposite होता है reduction. Reducing एजेंट पता चल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया. एक एग्जांपल दे देती हूँ of this redox reaction. Just for recapitulation again I am saying. Okay, so this is the example in front of you. Tell me which substance is getting oxidized, which substance is getting reduced, which is a reducing agent and which one is a oxidizing agent. This is a super easy question for you and I hope to see all your answers in the comments below. तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो इसी में इफ यू सी देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मैं इसकी बात करूं सो देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन became water. So hydrogen is getting
oxidized, right? Hydrogen is getting oxidized. Why? Because hydrogen plus oxygen हो रहा है, तो water बन रहा है. Whereas this copper oxide is turning into copper. So removal of oxygen is what? Reduction, right? I made a super easy and clear video on this topic, reduction and oxidation, about 20 to 30 minutes. But I can assure you that your doubts for this topic for lifetime will be clear. So you can just watch that out. I have chosen the topics that make it harder. Okay, so you can just go try watching it. Okay, so we got our oxidizing agent and oxidizing and reduction. Oxidized to a hydrogen is getting oxidized into water. Copper oxide is getting reduced into copper. Now tell me oxidizing agent and reducing agent. तो सिंपल सी बात है, जो रिडक्शन गो थ्रू कर रहा होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट मीन्स ये रिडक्शन होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नथिंग बट CuO. Whereas जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वही होता है एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन. ओके, यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल देख के यू कैन क्लियर अप योर डाउट्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन. बट in this particular chapter carbon and compounds, we are going to see oxidation in carbon compounds. ये तो सिर्फ एक था recapitulation. Now let us start the main thing. Oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen. Simple. कर लिया, we did the example. Now for oxidation in carbon compounds, we need some oxidizing agents. Oxidizing agents हम यूज करते हैं, और you can see it as catalysts, which are K2MnO4, K2Cr2O7. I think this is the right. Let me just check it once. Okay, so K2MnO4 is basically a potassium magnet and K2Cr07 is potassium dichromate. You can write it out, potassium magnet, and this one is potassium permanganate. तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन कार्बन कंपाउंड्स, वी नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम कैटलिस्ट भी कहते हैं. व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द केमिकल्स which speed up the process or which makes the process more easy. जैसे the example we did, we had no oxidizing agent. I am not talking about कौन सा oxidize हुआ, वो तो अलग बात है, but I didn't have any catalyst. यहाँ पे catalyst को मैंने oxidizing agent इसलिए कहा है because this catalyst actually help in addition of oxygen. तो इसको मैं oxidizing agent भी कह सकती हूँ. बेसिकली कैटलिस्ट हमने यूज किया था अभी एग्जाम्पल में, नो राइट? व्हाई? बिकॉज इट वाज अ सिंपल एग्जाम्पल. वी नीड नॉट यूज एनी कैटलिस्ट टू स्पीड अप. वो ऑलरेडी काफी इजी एंड स्पीड अप प्रोसेस होता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वी particularly use catalyst. And catalyst are what? They are the chemicals which speed up the process. जैसे we in a glass beaker, एक beaker में let's say you have in a beaker you have water and you added sugar, but sugar क्या होती है, सारी नीचे जमा हो जाती है. So what you do continuous stirring. अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये शुगर को अगर मैं डायरेक्ट वाटर में छोड़ देती तो वो कभी मिक्स ही नहीं होता, राइट?
अगर आप ग्लास में वाटर पानी के ग्लास में इफ यू पुट शुगर so it will get mixed with water but it will take much time a long period of time right but अगर मैं इसी ग्लास में जिसमें मैंने शुगर डाला है पानी डाला है इफ आई डू द कंटिन्यूअस स्टीयरिंग विद अ स्पून तो प्रोसेस कैसे स्पीड अप हो जाता है फटाफट हो जाता है राइट दैट्स द डिफरेंस दैट्स द डिफरेंस प्रोसेस तो ऐसे भी हो जाएगा एक बार को लेकिन कैटलिस्ट उसको स्पीड अप कर देता है लेट्स सी यहाँ पे जो स्टीयरिंग है स्टीयरिंग जो हम करते हैं दैट इज अ कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस I don't know how much you are understanding me so let me take an example let me just do that uh, mm, sorry for taking a long okay okay I think I'm done with my example sorry for taking long time तो ये है मेरा एग्जाम्पल पहले तो आई स्टार्ट विद द एग्जाम्पल टेल मी इट्स केमिकल नेम IUPAC नेम्स बताओ फॉर C2H5OH and for CH3COOH टेल मी फास्ट राइट नाउ okay giving you time comment me below waiting for your answers okay I believe very strongly that you all are genius and you must have able to answer it. If you wasn't, so don't be stressful. Go back to the video, watch it again. C2. C2 means two carbons. Two carbon means it. So it फिर OH. OH mean a single bond है तो इथेन and OH है so इथेनॉल. And this दो कार्बन तो इथ सिंगल बॉन्ड तो एन और COOH वाला देखिए तो क्या हो गया COOH is a significant is a symbol that it is a ethanoic acid right it is a oic acid तो when your alcohol हम ethanol को alcohol भी कहते हैं right when your ethanol is oxidized it gives me what ethanoic acid ये example will surely will come in your examination so please write this down ये example as it is तो मैंने एक कार्बन कंपाउंड लिया I oxidized it. Oxidized means I added oxygen and removed hydrogen and I got ethanoic acid. तो मैं इससे ये कह सकती हूँ that I can say that all when oxidized will give oic acid. ये मेरा अपना बात है not very significant तो you can just skip this thing ये मैंने अपने तरीके से याद किया था because in examination they will simply ask you that when ethanol is oxidized it becomes so you will write ethanoic acid ये example as it is आएगा यहाँ पे K2MnO4 मैंने यूज किया है that is potassium magnet but you can also use K2Cr2O7 that is potassium dichromate Now इस एग्जाम्पल को ही हम समझेंगे because oxidation is not really briefly given in your textbook and nor we need to understand although we are clear with the term oxidation what it is with many examples ample of examples but related to the chapter carbon and compounds this is the most significant and the triple star point topic
दिस एग्जाम्पल अलोन. तो इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं. एंड लेट अस कीप इट इन माइंड कि अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है इथेनोइक एसिड बनता है. इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज द कन्वर्सेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन. बट क्यों होता है, कैसे होता है, we'll learn that. Why we'll learn? Because it will make it clear and easy for us. Just let me check the settings. Okay. Did a little brightening because it was looking dull. Let me get back to the board. इस एग्जाम्पल को समझेंगे. ठीक है. Let me write down this example again. Okay. C2H5OH. Wait, let us write K2Cr. Let me इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाना चाहिए, right? K2Cr2O7 will convert it into CH3COOH. Ethanol to ethanoic acid by oxidation. So oxidation क्या था? Oxidation was simply the addition of oxygen and removal of hydrogen. Quite clear, right? Now let us draw the structure for C2H5OH. Let us draw the structure for ethanol. 2 carbon, single bond, and 5 hydrogen. Let me start distant marker here. And OH. ठीक है. Now oxidation says कि एक हाइड्रोजन हटा दो. What I did, ये ऐसे था स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो अच्छे से. C2H5OH इथेनॉल. The structure is this, right? Now oxidation means addition of oxygen and removal of hydrogen. तो addition of oxygen तो मैं यहाँ कर ही नहीं सकती because valency clear नहीं है, right? Valency is not clear. एक मिनट, let me draw the structure. Just let me एक second. Yeah, sorry. This is your ethanol. Now oxidation says what? It says removal of H2 and addition of O2. Okay, तो हम इसमें H हटाएंगे. बट एक H हटाने से तो काम चलेगा नहीं. Why? Because I have to do this. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, right? और एक मिनट, let me just write it again. This is your ethanol. अगर एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, सिर्फ एक, and I put oxygen, addition of oxygen, right? So double bond oxygen. So it is invalid because 1, 2, 3, 4, 5. 5 valency is not possible for carbon. So I need to remove one more hydrogen. So अब ये क्या बन गया? This became your ethanoic acid. देखा how easy? I just removed hydrogen and added oxygen. And ये बन गया. Let me just draw it again for you all. C2H5 Now I will remove 2 hydrogen. Here I am removing 2 hydrogen. Why 2 hydrogen? Because oxygen makes a double bond. Oxygen makes
डबल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाऊंगी और ऑक्सीजन लगा दूंगी डबल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी विल बिकम 5. दैट इज इम्पॉसिबल. द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. दैट्स व्हाई आई हैव टू रिमूव 2 hydrogen. So after removing 2 hydrogen, it will look like this. इस कार्बन के लेट से दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, अब बाकी एज इट इज लिख दिया, राइट मैंने बस क्या किया, आई रिमूव्ड दिस 2 हाइड्रोजन एंड रोट एज इट इज, लाइक एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एक और कार्बन OH एज इट इज, OH एज इट इज. आई जस्ट रिमूव्ड दिस 2 हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया. नाउ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डन. ठीक है. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन. याद रखना देयर आर 2 एजेंट्स. One is K2Cr2O7, second is K2MnO4. These two are the catalyst in this oxidation process. जब भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, we will need some catalyst, and that some catalyst is nothing but these two catalysts are the most prominent. सबसे ज्यादा commonly used catalyst for oxidation in carbon compounds are these two. This example is very important. I think it is clear to you, but removal of hydrogen and addition of oxygen is all. And I think whoever has learned this topic oxidation with heart in the starting of the class 10, it must be clear to you. But still, if you are not clear with the topic oxidation itself, you can watch my video. It is already there on the channel. So this is where we are completing with oxidation. Nothing very big to understand. Okay. I'm now rubbing it. Now the next chemicals one. मैं बताऊं उससे पहले एक बात बतानी थी. Unsaturated compound in brine solution gives brown color. Now read it again and try to understand. Sorry, I wrote a big wrong here. I meant to say bromine decolorize. So sorry for this mistake. Okay, so unsaturated compounds in bromine solution decolorize the solution. Sorry, decolorize the solution. What does it mean? So just by seeing any solution, you will not understand whether it is unsaturated compound or saturated compound. So a better way to understand or to find it out, like in acid and bases, previous classes, we learned कि acid and base को will not just taste it and understand कि okay, it is acid, it is base. What we do? We use a litmus paper. अगर रेड कलर है सो एसिड, ब्लू कलर है सो बेसिक. In the same way, unsaturated compounds can't be just seen and be like, oh, this is unsaturated compound. जैसे we draw the structure, वो actually तो दिखता नहीं है. If we just see it with naked eyes. That's why we can do bromine solution, unsaturated compounds. को अगर आप bromine solution में use करोगे, so it will decolorize, मतलब ब्रोमाइन का कलर ही गायब हो जाएगा. So that is characteristics of unsaturated. Whereas अगर आप सैचुरेटेड कंपाउंड को यूज करोगे तो वो डिकलराइज नहीं करेगा. ओके, स्मॉल थिंग बट इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark. Now substitution reaction. In this
reaction, hydrogen is substituted substituted with with functional group. In this reaction, hydrogen is substituted with a functional group, and to be more precisely, it is mostly chloride. I'm telling you what I mean. Just let me finish writing and then I'll explain you. Alkane. You know what is alkane? Single bond or saturated compound are least reactive. ठीक है? Alkane or saturated compounds are least reactive, and they are also known as parafixin, I guess. I don't remember the name very clearly. Sorry for that. Okay, so alkane and saturated compounds are least reactive. Now let me tell you what I mean. In oxidation, what we did, we removed hydrogen and added oxygen. वो फिक्स था कि हम ऑक्सीजन ही ऐड करेंगे, बट इन सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, वी रिमूव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बदले वी ऐड एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप जो कि आप पढ़ चुके हो, बट मोस्टली इट इज क्लोराइड. मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करते हैं वो होता है क्लोराइड. ठीक है. H2 is substituted by a functional group जो कि क्लोराइड होता है. मोस्टली क्लोराइड क्या होता है, एक हैलोजन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है. सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था यही, राइट. नाउ इतना तो समझ आया, कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन हटाया और उसके बदले फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वो मोस्टली क्लोराइड होता है. बट व्हाई दैट्स अ क्वेश्चन, राइट. इट इज बिकॉज एल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं. ओके. अब ऐसा होता है कि इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं दैट बट अंडर द सन कुछ ऐसा ब्रेक डाउन होता है एंड फर्दर प्रोसेसेस एक्ट्स सच दैट वो इतना कम रिएक्टिव होने के बाद भी हाइड्रोजन हटा के क्लोराइड को एड ऑन कर पाता है. Saturated compounds are least reactive, but still under the sunlight they are able to just make a compound with chloride by removing hydrogen. So that's why it says that in this reaction hydrogen is substituted with a functional group, जो कि mostly हमारा halogen chloride होता है. Why? Because alkane or saturated compound are least reactive. We'll do example and we are done with this. A very short topic, not briefly described. So why to go in deep, right? जो चीज जितनी दी है उतनी ही पढ़नी है हमें, right. So the examples goes like किसका एग्जाम्पल लूं? Let's take ethane. C2H6 यही होता है ना, 1 2 3 4 5 6. ओके, यही होता है. चेक कर लेना, इजी होता है. 1 2 3 4 5 6. ओके. C2H6 plus Cl2 will give what? Tell me. So C2H6 plus Cl2. तो अभी क्या होगा, एक ही क्लोराइड ऐड होगा. यहाँ एक क्लोराइड आ जाएगा और यहाँ एक H आ जाएगा, ये HCl बन जाएगा. कूल. एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया और एक क्लोराइड यहाँ से यहाँ आया. फिर फर्दर क्या होगा, अब ये वाला जो बना है C2Cl HH
H H H, इसका नाम क्लोरो इथेन। और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले तो मैंने क्या किया था, इथेन प्लस क्लोरीन क्लोराइड। इथेन प्लस क्लोराइड विल गिव मी C, just let me write it down, C2H5 C2H5Cl plus HCl। ओके, इस रिएक्शन से वी गॉट दिस। फिर से अब ये रिएक्ट करेगा प्लस HCl, तो फिर से अब यहाँ पे एक जाएगा, विल रिमूव वन बॉडी से हाइड्रोजन एंड एक क्लोराइड आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम H2। ठीक है, सो विल राइट इट एज C2H1 2 3 4H4Cl2, सो डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, so basically what we do, we remove hydrogen and substitute chloride, right? Let me write down the series of this, पूरी series लिख लेती हूँ मैं for you। Okay, so I wrote a table। ये substitution reaction में जैसे we removed hydrogen and added chloride, we do it till जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। लाइक हियर C2Cl6, कोई हाइड्रोजन नहीं बचा यहाँ पे, Cl2HCl5, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा था, तो मैंने फिर से सब्स्टिट्यूशन किया एंड आई गॉट C2Cl6 एंड HCl। तो सब्स्टिट्यूशन हम इतनी बार रिपीटेडली करते जाते हैं टिल द टाइम पूरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट उस फंक्शनल ग्रुप से ना हो जाए। मतलब इस कंपाउंड में एक भी हाइड्रोजन जब तक ना बच जाए, सारे हाइड्रोजन हट जाने चाहिए। जब तक ये ना हो, वी कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस। लाइक हमने स्टार्ट की थी इथेन से, इथेन से बना ये क्लोरो इथेन बन गया और HCl बना। फिर से मैंने किया I got it reacted with chloride और ये बन गया डाइक्लोरो इथेन। फिर से मैंने डाइक्लोरो इथेन को Cl के साथ रिएक्ट कराया, ये बन गया ट्राइक्लोरो इथेन। एंड आई केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द टाइम मुझे ये C2Cl6 ना मिल गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इवन यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, राइट? सो आई कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी सी एल्केन के साथ क्लोराइड ही रिएक्ट करता है, बिकॉज एल्केन आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, राइट? एल्केन आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव and alkane goes under substitution reaction, means removal of hydrogen and substituting any functional group। और most probably वो functional group क्या होता है? क्लोराइड होता है। So this was all about substitution reaction, nothing more or less to understand। I hope it is clear with one and all seeing this video। If any doubts, you can comment me below। In the next video we are going to continue and hopefully soon going to complete the chapter। For now, I hope you like my video। If you do, so like, subscribe and share my channel। Also, don't forget to ring the bell hang button so you will get all the notifications of my channel। Till then, bye bye, stay blessed and subscribe to my channel and ring the bell hang button। So subscribe।